Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to everyone who has joined us for the event today. स्वागत है आप सभी को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं. We are honored to have with us the joyful presence of some very esteemed guests. Please join me in welcoming Ms. Praveena Rai, Chief Operating Officer, National Payment Corporation of India. Mr. James A. Raphael, Executive Head, Retailers Association Skill Council of India and Joint Central Apprenticeship Advisor, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. All our friends from the media fraternity who are covering this event today. Our retailer friends who have joined us on YouTube Live. स्वागत है उन सारी रिटेलर दोस्तों को जो आज हमारे साथ YouTube Live से जुड़े हैं. And last but not the least, Mr. Anant Kumar Bajaj, Founder, MD and CEO, Pay Nearby. A very warm welcome to all of you. भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे दुकानदार यानी रिटेल पार्टनर्स. Whether it is our metros or the remotest village in the country, they are the heart of the society, bringing to us our survival necessities. Whether it is summer, winter, rain or COVID, with competence, without compromise, every day. किसी ने मुझे कुछ दिन पहले कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ अब समय आ गया है हम बोले जय दुकान. और साथ में मिलके ये कमिट करें कि भारत की हर दुकान को हम कैसे आधुनिक बनाएं, कैसे मजबूत बनाएं, कैसे कल के लिए तैयार करें, ताकि हर दुकानदार ये गौरव से कह सके जिद आगे बढ़ने की. It is only then that we will have a truly inclusive society where a strong network of empowered merchants will ensure last mile delivery of all critical services to the country. Today, we have gathered here to launch one such service. एक ऐसा प्रयास जो भारत की दुकानों को बनाएगा आधुनिक, डिजिटली सशक्त और नए भारत के नए ग्राहकों के लिए तैयार. भारत के हर कोने में मिलेंगे आपको कई ऐसे दुकानदार जो महज व्यापार नहीं करते, सामानों के खरीद बिक्री के बीच कई रिश्ते संवारते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं. भारत के हर कोने में मिलेंगे आपको कई ऐसे दुकानदार जो मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं. उन्हें जिद है आगे बढ़ने की, उन्हें जिद है नई बुलंदियां छूने की. सर्दी, गर्मी, बरसात हो या हो कोरोना काल, उन्होंने हमें हमेशा खुद से पहले रखा. हम सभी के घर तक जरूरी सेवाएं पहुंचाई. ऐसे करोड़ों दुकानदारों से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, नई कहानी गढ़ रहा है. इस नए भारत में जरूरी है कि आप सभी दुकानदार भी आगे बढ़ें, अपनी दुकान को डिजिटल करें, स्मार्ट मर्चेंट्स का एक डिजिटली सशक्त नेटवर्क बनाएं ताकि हर ग्राहक आप तक पहुंच सके. पेश है रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से पे नियर बाय नियो दुकान. एक ऐसा प्रयास जो भारत के हर दुकान को बनाएगा आधुनिक, डिजिटली सशक्त और कल के लिए तैयार. वन क्लिक डिजिटल स्टोर, डिजिटल पेमेंट्स, कस्टमर खाता, होलसेल में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट जैसी अनेक सुविधाओं के साथ पे नियर बाय नियो दुकान जो बनाएगा आपके बिजनेस को बेहद आसान. तो हो जाइए तैयार अपनी दुकान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारे साथ पे नियर बाय नियो दुकान. Yeah, good morning everybody. It's such a pleasure to be here. There's nothing more important than awareness and education for the entire digitization journey of the country. So we are going so fast, we are moving so fast in our journey of digitization. When we just look at the digital payments, we are targeting 60 billion transactions of digital payments this year, most of which is driven from the merchant ecosystem. And the growth rate is nearly doubling
once in 18 months or so. So at this pace, the consumer is becoming more and more aware, and it is important for the merchant, the retailer, the dukandar to be completely cognizant and understand the modus operandi of digitization. How to digitize their business, how to take advantage of the new opportunities and reach new customers through the digital platforms, how to make it very convenient for their customers to order from offline model to come and pay digitally at the store, and to take advantage of new programs like e-Rupee that can create new business streams and revenue generation and growth of profitability for the merchant. So, in addition, we also need to understand how to solve the customer's problem. Customer thinks that they have purchased a product, customer thinks they made a payment, but if there is an issue, the small awareness on how to quickly help the customer solve that issue is also important. So, there's nothing more important in this journey than making the merchant aware, making the retailers fully educated on the opportunities to grow their business and how they can serve their customers better. In all the conversations I've had with merchants, small merchants, I sometimes go on small market study, to the market sometimes in Mumbai or other towns. And the only one point that the retailers make is, whatever my customer wants, I will support. So the customer's demand is there, and if we can power our retailers, then I think we are really well down this path for everybody's benefit. Thank you, and wish Rashi and Pay Nearby a great journey in this. It's very important for the country, and really look forward to getting millions more merchants on the digitization journey with us. Thank you so much, and a very good morning to all of you. Thanks for this opportunity. And I'm not going to be sharing few words. There are so many words that I can share on this remarkable journey that we've had with Pay Nearby, and it's been an exhilarating experience in taking skill initiatives, various ones, right up till the doorstep of the dukandar. And the way I look at this initiative and the way we're getting into the last mile or the customer touch point, irrespective of the location. If I have to look at it from the skilling perspective, it will also look at or impact the economy at a larger scale. So if I have to put it in one word, in one statement, this initiative is actually going to be reducing the divide between rural and urban India. Permit me to qualify this further. I still remember, once upon a time, maybe around 2 decades ago, when I used to be with one of the leading banks, which is the leading bank even today, and I was with their merchant services, which is typically enabling a retailer and enabling digital payments in that space, irrespective of the format or the size or turnover that they were into. There used to be certain norms, and many a times the procedures would be such that would need to work also as a deterrent for establishments that may not qualify to certain conformance parameters, as it's a regulated field. Today, if you actually go to see a retailer who could be probably a photocopying business, जो typically Xerox copy निकालता है सब लोगों के लिए, that retailer also can get embraced in this journey. And there is no differentiation. So you may be in whichever pin code, you may be in urban, rural, you can actually get digital payments enabled. There are multiple things associated with that also. Now, how does this help the retailer actually? सीधी बात है, धंधा बढ़ जाता है, your business increases. And if you actually go to see, now let's look at
one of the most remote areas, because retail, the best part about retail is wherever there is life, there is consumption that is affected. And for consumption to be affected, you have to have a retailer. The retailer could be a mobile person, could be a fixed person, could be a person direct to consumer. So there are multi modes or omni-channel, as I would use the term. Now, if we look at it from that perspective, with the retailer's business in rural India getting enhanced or getting improvised upon year on year, what scope gets created in that remote area? The scope that gets created is more business, more manpower required. And if more manpower is required, look at it from the goodness that can actually happen pan-India. So, if there are opportunities, like for example, suppose there is a retailer who today is not digitally enabled, okay, and tomorrow that happens, business increases, he flourishes, he or she has opportunities. Let's say they reach a stage of including the proprietor, let's look at it, जो दुकान का मालिक है और 2-3 बच्चे जो एक्चुअली वहां पर काम करते हैं. If there are 4 people, for example, that are working in that establishment, there is a scheme from the government of India itself under the Apprenticeship Act. The dukandar can actually opt for hiring or contracting an apprentice and the associated benefits with that. So what does that do to rural India? You get employment opportunities created, and with this employment opportunity, then for a child to become economically independent, he or she need not migrate from rural India for an opportunity and clutter and further increase the density in the metros. So the opportunity comes there, and what happens is, the goodness is that this opportunity is actually created in his or her vicinity or the proximity or where the person resides. So that comfort level is there in the nascent stages of his or her career. For vertical mobility, yes, the person will move from rural or remote areas to more urbanized areas, and who knows, it can be beyond even the geographical boundaries of the nation tomorrow. You can become the CEO of an MNC residing somewhere else. So that's the success story that can be created. And in this journey, if you impact, like how I gave the example of one person getting economically independent, let's look at it from this perspective. In that remote area, you do it with 300 people. Okay, so you're doing it with 300 people. What effectively are we doing? Those 300 people start earning a stipend, a salary, and hence the purchasing power in that rural area increases. If the purchasing power in that area increases, consumption would get triggered. If consumption gets triggered, you will have trade, you will have communication, road, infrastructure, etc., that will get improvised. And if that happens, that's how we would reduce the divide between rural and urban India. And hopefully, there will be one day wherein we say the entire nation is urban. And I'm happy to partner with Pay Nearby on this journey, and it almost is, a relationship that has an umbilical cord, because the business of Pay Nearby complements the Skill India missions, initiatives and objectives so with so many synergies that any topic, any discussion, any area that we get into is something that we can, yes, it's something that we need to do. Let's not discuss, let's just roll up our sleeves and get into an action mode. And thank you so much. I look forward for, to share much more about this journey as we go ahead in this conversation. Thank you so much. हर दुकान डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एक मुहिम है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है, ये एक मुहिम है डिजिटल सशक्तिकरण की, ये एक मुहिम है कौशल विकास करने की और जॉब्स दिलवाने की और भारत को इंडिया से जोड़ने की। पे नियरबाय में हमने गत 5 वर्षों में कई ऐसे मॉड्यूल्स बनाए जिससे रिटेलर का सशक्तिकरण हो, दुकानदार और स्ट्रॉन्ग हो ताकि वो अपने नज़दीकी ग्राहकों को और बेहतर सुविधा दे पाएँ। और लास्ट 3 साल में हमने बाय नियर बाय
और पेमेंट के एक एक करके 5-6 मॉड्यूल्स लॉन्च किए और हमें एहसास हुआ कि अब ये समय आ गया है जब हम इस एप्लीकेशन को एक नियो दुकान के फॉर्मेट में निकाल कर अपने बगल के सभी मर्चेंट्स को, सभी दुकानदारों को मुहैया करवाएं। ये मुहिम आज भारत सरकार के नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल एजेंडा से भी जुड़ी है कि हमें रिटेलर का सशक्तिकरण ही नहीं, सिर्फ उन्हें स्किलिंग भी करवानी है। इसलिए राशि का जुड़ना लाजमी है। दिस इज बट ऑब्वियस एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडिंग अस इन दिस एंडेवर, इन दिस जर्नी। इस में हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। साथ में प्रवीणा राय, एनपीसीआई की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो आज बम्बई की काफ़ी भयंकर बारिश में भी एमईटी के ऑरेंज डिक्लेरेशन होने के बावजूद भी इन्होंने परेल से लेकर साकीनाका तक की जर्नी तय की है। ये राष्ट्रहित में समर्पित है ये पूरा कार्यक्रम। आज आपको ये बताते हुए हर्ष होता है मुझे कि जो पे नियर बाय मॉड्यूल है वो हमारे रिटेल भाइयों को एडिशनल इनकम दिलवाता रहता है। बैंकिंग और अन्य सुविधाएं उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाई जा रही हैं। लॉट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज आर बीइंग इंटीग्रेटेड इन दिस प्लेटफॉर्म so that the retailers can be the front runners, the warriors, the COVID warriors as recently recognized, to reach these services, the important services to citizens. The Neo Dukaan helps modernization of retail, which will help augment the engagement with retailers, between the retailers and the customers on one hand, between the retailers and the supply chain on the other hand. इसी प्लेटफॉर्म से हमारे रिटेलर भाई, दुकानदार भाई कस्टमर को सुविधाएं मुहैया कराएंगे और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह अपना स्वयं जो राशन प्रोक्योर करते हैं, सामग्री खरीदते हैं, वो भी सुविधा उनको उपलब्ध हो पाएगी यहाँ से। इसी पर ई कॉमर्स जुड़ के ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिक्री करवाएगा, जहाँ रिटेलिंग के मायने बदल जाएंगे। जी हाँ, एक फर्टिलाइज़र खाद की दुकान पर आज फुटबॉल बिक पाएगी और मेरी बिटिया फ्रॉक खरीद पाएगी स्टेशनरी की दुकान से। रिटेलिंग में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है और हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि पे नियर बाय के जो रिटेल डिजिटल प्रधान पार्टनर हैं आज मिलकर इस मुहिम को कार्यान्वित कर रहे हैं। मैं एक बार आपका फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूं इस मुहिम में हमें यहाँ तक लाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को आगे अग्रसर करने के लिए। धन्यवाद। ये है हमारी पड़ोस की दुकान और ये हमारा आधुनिक भारत जो मांगे आधुनिक सुविधाएं। अब हर दुकान बनेगी नए दौर की नई दुकान, जिसमें दुकानदारों के लिए हर तरह की सुविधाएं हथेली में उपलब्ध। पेमेंट की सुविधा, डिजिटल हिसाब की सुविधा, ऑनलाइन स्टोर की सुविधा, होलसेल दामों पर ऑनलाइन खरीद की सुविधा। इस नए दुकान में हर प्रकार के पेमेंट स्वीकारे जा सकते हैं, बिल्कुल आसान, नकद स्वीकारने जैसा। यही नहीं, डिजिटल खाते की सुविधा से हर ग्राहक का हिसाब तुरंत पाएं और समय पर पेमेंट की याद दिलाएं। अब नए दौर का नया दुकानदार बनना बहुत ही आसान। पे नियर बाय और रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से बना नियो दुकान ऐप एक ठोस कदम डिजिटल भारत की नियो दुकान, जिद आगे बढ़ने की। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या अपने मौजूदा पे नियर बाय ऐप से नए मर्चेंट को रजिस्टर करें।